Sir, when I'm talking about the city, sir, I would like to again say that in the year 2020, we faced a lot of problems due to the lakes in the upper area at Jalpalli Lake. Jalpalli का तालाब भरने से वो उम्दा सागर में आया, उम्दा सागर से पल्ले चेरू से यहाँ से फिर हम महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा की पर भी तालाबे हैं, वो भी टूटे हैं। अगर इस वक्त शहर हैदराबाद हमारा जीएचएमसी एरिया अगर बचा तो उसकी वजह यह है सर कि ये पहली बारिश थी, तालाबों में जगह थी पानी को लेने की, अब ले लिए, अब फिर अगर बारिश आएगी तो क्या होगा? वी नेवर नो। सो माय क्वेश्चन टू ऑनरेबल Deputy Speaker, sir, through you to the government is that, are we prepared? Are we preparing ourselves for the coming 2 months? बारिश अब शुरू हुई है साहब, अभी बाकी है, अगस्त का महीना बाकी है, सितंबर का महीना बाकी है, अक्टूबर है पूरा। तो सितंबर के बारे में आप भी जानते हैं, हैदराबाद के बोलते हैं कि सितंबर का महीना मतलब सितमगर का महीना, इतना सितम करती है बारिश, तो फिर अब कैसा होगा? तो these are the questions which needs to be answered. But unfortunately, Honorable Deputy Speaker, sir, when we see this note is very silent. It is not mentioning as to what are the futuristic measures that we would be taking. This doesn't mention about that, sir. So the amount required for permanent restoration work and relief assistance for the damage caused to life and property, both private and public, due to the heavy rains and floods would be 3,591 crores. For immediate restoration and outlay of rupees 2,635 crores would be required. The total requirement of funds is rupees 6,226 crores. This excludes irrigation sector. These are my figures, but I would have appreciated that. I mean, if this was being mentioned, sir. Sir, I hope. Sir, the state cabinet sanctioned rupees 500 crores for immediate relief and restoration work as against the requirement of 6,226. Now the question will arise, where did I come to the 6,226, sir? Sir, seeing the note, I calculated and I prepared my statement, sir. I prepared my statement. In the note itself, it is mentioning that we require 6,226 crores. And when the requirement is 6,226 crores, now the relief given by the state government is only 500. So I would like to know from the government, are they going to give more of money for the restoration of works, for the damaged crops, and what is the plan which the government has, sir? Sir, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।